धराशायियों को विजयी हो जाएगा। जनता के बीच भेज रहे हैं हम बच्चों को फासिस्ट क्रिमिनल। समझाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। Hello and welcome to this special NDTV broadcast coming to you live from Patna in Bihar, where a major political earthquake has taken place this week. Nitish Kumar dumped the BJP and has walked back into his alliance with the RJD, the Congress and other opposition parties for the Mahagathbandhan 2.0. This is a political development that isn't just significant for politics in Bihar, but has implications nationally as well, particularly in the run-up to the 2024 general election. Joining us exclusively on NDTV today is the Deputy Chief Minister of Bihar, Mr. Tejashwi Yadav. Tejashwi Yadav, thank you so much for joining us. Many congratulations for taking oath just 24 hours ago. Tell us, how did this alliance with Nitish Kumar happen? Where did it all actually start? Thank you very much. We were able to see that Nitish ji were very uncomfortable, whether it was in the house or whether outside. Something was BJP, they were trying to impose on him, and that's why he was feeling very uncomfortable. And something was very disturbing that we could have seen in his face, in his expression, in his body language, that he was quite depressed. As you can see, that BJP people like Lalan Singh had he did a press conference and he said that BJP were trying to break his party, what they were trying to do in all other states in India, same thing they were trying to do in Bihar. And let's not forget that Nitish ji were the oldest alliance with the NDA, and he was this, if you'll see the Hindi belt, he was the only single left alliance with the BJP. And now he is no more with BJP. We did a meeting over here. We spoke to all the party workers, MLAs, MPs, everyone, and we reported to our national president that something is going to happen. When was if this? Situation will happen, how we'll deal with this. But when was this? Was this a couple of months ago? See, if you'll see, after the Bochaha election, what happened, like after the by-election, we won the election. But in the house, when there were argument happening with the speaker and with the CM, first time we had seen it, and never it had happened anywhere in any of the assemblies, or whether it's in the parliament, arguments happening between the house leader and the speaker. So they were very uncomfortable, and what we were doing, we were totally, our eyes were on the political development, and there were several spokespersons of JDU or BJP. They were giving their statements against So each who other. got in touch with whom? Did Nitish Kumar reach out to you, or did you reach out to him? How did this actually start in the last few months? देखिए, 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे MLAs की मीटिंग हुई, उनके MLAs की मीटिंग हुई, और नीतीश जी इस्तीफा रिज़ाइन दे करके सीधे यहाँ आए. He convinced our MLA, and जो देश का जो सीन था, जो माहौल बना हुआ था, जहाँ सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे खतरा था, डेमोक्रेसी पे खतरा था, लोकतंत्र पे खतरा था, तो कहीं ना कहीं से जो असहज जो महसूस कर रहे थे, अनकंफर्टेबल जो महसूस कर रहे थे, तो बातचीत जो है वो चल रही थी. कई महीने से चल रही थी. नहीं, कई महीने से आप नहीं कह सकते हैं.
मतलब यू आर सेइंग इट्स मोर रीसेंट। आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट जो चल रहा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें सभी लोग जो हैं, वर्कर हों, उनके नेता हों, वो सारी बातें हो रही थी। तो ऐसी कोई पहले से प्री प्लान्ड आप कह सकते हैं वो बात नहीं थी। ये जो बातें हुई हैं ऑन स्पॉट, स्पॉन्टेनियस हुई है। ओके। जो डिसीजन हम लोग जिस दिन बैठक कर रहे थे एनडीए के लोग, ऐसी कोई बात एनडीए कह रहा हूँ मैं, महागठबंधन के लोग जो बात कर रहे थे, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन हम लोग तैयार थे कि कोई भी वर्स्ट पोजीशन आए तो हमारा एक्शन क्या होगा। मैं कई महीनों की इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज वी हैड नोटिस, जैसे इफ्तार था ईद के टाइम मई में, वो आपके घर आए, आप उनके घर गए, जिस तरह से उन्होंने आपको इतना मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखिए, उनका वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखिए, लेकिन आप उनको अटैक भी नहीं कर रहे थे कई महीनों से जेडीयू को। नहीं, हम नॉट एज मच एज यू यूज्ड टू। नहीं, हम किसी पे नहीं बोल रहे थे, हम तो ज्यादातर चुप ही बैठे हुए थे। हम तो जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो एक दूसरे को वो जो बयान जो आ रहा था, उसको देखते हुए आई वाज क्वाइट ऑन दैट इश्यूज। एंड पहले so you're saying it was a more spontaneous thing, but can I ask you, Tejashwi Yadav, that you have a very complicated history with Nitish Kumar. He was with the BJP, then he was with you. In 2015 you won the Bihar election. In 2017 he walked out of that alliance, and he specifically cited corruption allegedly by you and your family as the reason for walking out of that alliance. आप लोगों ने एक दूसरे को गाली गलौज भी करी, सांप बोला, both sides called each other snakes. How do you explain that contradiction? What his stand was about you and you about him, and coming together today? The first time it had happened that नीतीश जी और लालू जी का महागठबंधन 2015 में बना। उससे पहले he was the part of the NDA and he was the oldest allies and most trusty allies of the NDA. 2012 के बाद ये घटनाक्रम हुआ। बीजेपी के लोगों ने 2012-13 में नीतीश जी के बारे में क्या कहा? Why we forget that मोदी जी had raised question about the DNA? लेकिन फिर भी 2017 में भाजपा के लोगों ने क्यों समर्थन किया फिर नीतीश जी का? He had called मोदी हिटलर, नीतीश जी। नहीं, उन्होंने तो पहले भी कहा था कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो भी बताने का काम किया। देखिए, वी सोशलिस्ट पीपल, लेकिन जो खतरा जो देश में जो माहौल जो बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, डेमोक्रेसी पे जो खतरा है, वो बीजेपी की वजह से है। और जो गंगा जमुना जो तहजीब जो है, जो भाईचारा है, जो सोसाइटी में जो पॉइजन जो फेंका जा रहा है, वो आप कह सकते हैं बीजेपी के द्वारा है। हम लोगों ने पहले भी कभी भी नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म के इशू पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा आप बिहार देख लीजिए, हमेशा जो है यहाँ कभी भी ऐसे बड़े वारदात नहीं हुए जो अदर स्टेट्स में हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा, कास्ट सेंसस की जहाँ तक बात आई, तो ही वॉज वेरी मच विथ अस ऑन दैट इशू एंड ही सपोर्टेड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं से आप ये कह सकती हैं हम सोशलिस्ट लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। हाँ, हम उन पे एलिगेशंस लगाते थे, उन्होंने हम पे लगाया, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली वी आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड विद द सेम आइडियोलॉजी। Have you put that behind you? तो वो जो आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं से हम लोगों से मेल खाता है, ना कि बीजेपी अलायंस से मेल खाता था। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, बीजेपी आइडियोलॉजी इज आरएसएस एजेंडा, यू कैन से जो बंच ऑफ थॉट्स जो है, जिस किताब जो बाबा गोवलकर का, उसके रास्ते बीजेपी चलती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ that when a politician like नीतीश कुमार switches sides, polar opposite sides so often, जैसे उन्होंने किया है, does it not hurt his credibility also as a politician? And for you as an ally of his, how do you know that the alliance will last this time? What is going to be different about this time from 2017? अभी the scenario is very different, and this was the need of the time, need of an hour. और बिहार ने जो किया, जो नीतीश कुमार जी ने, you can say he took a very needed decision to come out from the NDA and join महागठबंधन.
it has given a message. Difference आपका ये है कि when JP Nadda come to Patna and he says we have to finish regionals party, we have to finish opposition, we want to see BJP flag in every state, BJP government, not NDA, BJP government, and he said about regionals party, यानी you coming in a place जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी, और जब आप ऑपोजिशन और रीजनल्स पार्टी को खत्म करने की बात करते हो, दैट मीन्स यू वांट टू फिनिश द डेमोक्रेसी. एंड हाउ वी कैन टॉलरेट, हाउ वी कैन टेक इट. It was a compulsion that brought you together to save yourself. Definitely what was happening. They were trying to finish. What Lalan Singh ji had given statement and he did a press conference, he had explained each and everything. What BJP strategy was, how they manipulating people, चाहे CBI का use करना हो, चाहे पैसे देने की बात आई हो. We have seen it in Jharkhand. What is happening in Jharkhand? What BJP tries to do? All the stable government, they try to demolish, whether with the help of ED or CBI or with the help of money. So you don't think Nitish Kumar's credibility politically has been hurt by these flip-flops, political flip-flops? See, Nitish ji is a very experienced politician. He has the most experienced chief minister of this country. He was the union minister also. He is the member of Bihar Vidhan Parishad. He used to be a member of Bihar Vidhan Sabha. He used to be member of Lok Sabha. So he is a very experienced man. We cannot say that credibility has gone down. Otherwise, why BJP, they didn't come all alone and for the election? Why they were dependent on Nitish Kumar ji? Why never जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका कोई नेता क्यों नहीं बना? क्यों हमेशा जो है डिपेंडेंट रहे वो नीतीश कुमार जी पर? लेकिन तो यू कैन सी आप कब तक रहेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? मतलब द टॉक टुडे इज कि तेजस्वी यादव, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आप मुख्यमंत्री बनेंगे. नीतीश जी ही विल मूव टू अ नेशनल रोल. यहाँ बारिश भी हो रही है जैसे हम बात कर रहे हैं, इट्स नाइस, बट कब तक रहेंगे आप उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कब बनेंगे? आप ये कह सकती हैं कि अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, आप मरने की डेट पूछ रहे हो उससे, तो ये बात कौन कब क्या रहेगा नहीं रहेगा ये किसको पता है? तो ये क्वेश्चन अभी एग्जिस्ट इतनी जल्दी तो करता नहीं. लेकिन हाँ, आई कैन से अब जो कमबैक हुआ है नीतीश जी का, एक पूरे दिल से आए हैं, अब पूरे जोरदार तरीके से आए हैं. उन्होंने साफ कर दिया सारी अटकलों को. उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को वो साफ कर दी. वो जिस प्रकार से इंटरफेरेंस हो रहा था, जिस प्रकार से इम्पोज करना चाहती थी बीजेपी, अपने तरीके से चलाना चाहती थी, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी है. जो पहला महागठबंधन था 2015 में, तब कहा जाता था कि it was your father that was calling the shots and that was a reason for tension between him and Nitish Kumar, and one of the reasons that he walked out of the alliance at that time with the RJD. So what is the lesson you've learned from that, and how will Mahagठबंधन 2.0 be different in the way that it does the governance and your equation with Nitish Kumar? Yes. When I was the deputy chief minister for the first time, I was the MLA also for the first time. And I was deputy chief minister for almost like 18 months. कोई एक क्वेश्चन नहीं उठा सकता उस 18 महीने में जो मिनिस्ट्रीज हम लोगों ने चलाई हैं, सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं. और आज जो स्थिति पैदा हुई है देश में, आज इतनी बुरी हालत है देश की, आपका इकोनॉमी ठप हो गया, आपकी देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, पूरे इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रखा है, देश की सिक्योरिटी को लेकर के खतरा है. अब तो चाइना जो है लद्दाख में गांव बसा रहा है. जितने भी इनके डिसीजन रहे एनडीए सरकार के सेंट्रल में, वेदर डीमोनेटाइजेशन, वेदर जीएसटी, या इनके जितने भी स्कीम जो चले,
स्मार्ट सिटीज हो या गंगा सफाई योजना हो या इनके और भी जो योजना है। यू आर सेइंग इश्यूज हैं आपके पास। मैं आपको नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ। यस, दैट इज व्हाट आई वांट। 2002 2020 माय मेन एजेंडा वाज बेरोजगारी। और देश में आज बेरोजगारी और महंगाई है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है और प्यार मिला था। इसी वजह से वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एंड हमारे अलायंस में और उनके अलायंस में देयर वाज ओनली डिफरेंस बिटवीन 12,000 वोट्स। नाउ इफ यू सी आफ्टर द बोचाहा इलेक्शन हमारे वोट परसेंटेज हाई हो गए बाय द वोट परसेंटेज। बट 2 दिन पहले भी हम रोड पे निकले थे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के। तो दिस इज अ मेन एजेंडा, और ये हमको अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि हम इस बट ये दिशा में काम कर अपॉर्चुनिटी सकें। खाली महागठबंधन के लिए नहीं है बिहार में, इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटायर ऑपोजिशन, इजंट इट, इन अहेड ऑफ 2024। आप मुझे बताइए दैट व्हाट डज दिस डेवलपमेंट मीन फॉर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इन 2024। लोग कहते हैं कि नीतीश जी एक कंसेंसस कैंडिडेट बन सकते हैं ऑपोजिशन के। ही इज अ टॉल लीडर, हिंदी हार्टलैंड स्टेट, क्लीन इमेज, नॉन कांग्रेस। तो क्या आपको लगता है कि उनको ऐसा रोल निभाना चाहिए? ये पहले भी पूछा गया था और मैंने जवाब भी दिया कि ये नीतीश कुमार जी पे मैं छोड़ता हूँ। आपकी कोई राय तो होगी। और लेकिन जो बिहार ने करके दिखाया है, ये पूरे देश में इसका संदेश क्या है, मैसेज क्या है। आज जहां ऑपोजिशन की जहां सरकारें हैं, वहां वो बीजेपी के लोग तोड़ रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, चाहे धन या बल के जरिए। लेकिन बिहार में जहां एक ऐसा काम करके दिखाया है जो एक मैसेज पूरे देश में गया है कि आप लड़िए, आप खड़े रहिए, आप डरो मत। और वाकई में आप कह सकते हैं दिस विल वर्क एज अ बूस्टर to the opposition. to the opposition all over the country. So the message to other opposition parties you're saying is don't be scared, you can stand up to the BJP. That's what you're saying. Yes, obviously. And किस बात का डरना? खुलेआम देश में गुंडागर्दी हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको ईडी मिसयूज कर रहे हैं आपको लोग। ईडी का डर नहीं लगता? नहीं, वो ऑफिस खोल ले हमारे घर पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई कैन give them a message through your channel. I'll give them an invitation. Please to ED, CBI, income tax, please come and stay as long as you want to. You'll give them a room. क्यों आप 2 महीने बाद छापे मारते रहते हो? यही रहो ना, कुछ नहीं होगा। आज क्या काम है उनका? What is their duty? वो नहीं करके ऑपोजिशन के पीछे भागो। यू वर्किंग लाइक बट जो बीजेपी का पार्टी का सेल की तरह। जो ऑपोजिशन के फेस का क्वेश्चन है, आपने कहा कि इट इज अप टू नीतीश जी, ऑफ कोर्स इट्स अप टू हिम, बट इन योर ओपिनियन is he somebody who would be best placed to lead an opposition alliance? There are so many claimants to that job. He has qualities, he has experience, he has administration experience, he has a social experience, he's been except Rajya Sabha, he's been into all the houses. He was a union minister. So he's well qualified. Yes, obviously. Tell me, compare anyone. If Narendra Modi ji can become PM, then why not Nitish ji? Anyone can become PM. If he can become PM, then anyone can become PM. What is happening to our country? So that's reported. Have you seen any press conference or any interaction of Narendra Modi No. with the media? Why not? Why he cannot take questions? No, but you are endorsing Nitish Kumar for Prime Minister. But Tejashwi Yadav, what about the fact that there are so many opposition leaders who want to be Prime Minister? Mamata Banerjee hai, there is Chandrasekhar Rao, there is somebody in the Congress, maybe Rahul, I don't know. And you have Sharad Pawar. I was a cricketer. You were a cricketer. And there's several of players wanted to represent Indian team. But only 15 can play, na? So who has quality and who will perform? Let the selector, and selector is people of the India, let them decide. But our duty
is to give a good governance. We have an opportunity in Bihar. We can show the development. How will you get the opposition together though? आपने तो दिखा दिया कि बिहार में हो सकता See, है. everyone has to understand that. That's a very good question. And through you, I can say all the opposition party to sit together and let's make a roadmap, be clear, let's make a strategy. We are too late for this. We have to do something. People of this country need an option. They want a face against Narendra Modi ji. Let's not fail. So you're Let's not destroy the hope, belief. So you're appealing to the opposition to get Yes. together. Yes. So how have you changed, Tejashwi Yadav, in the last 5 years? You seem to be a very different person from the politician you were in the last, in the last government. What has changed about you, and how much has your father played a role in the formation of this How can I say Gathbandhan? about myself? I mean, you know. It's people who will decide and who will judge. But what Let do them you feel? judge. What do you feel has changed I about have you? gained more experience. I have been learning, and I will learn many things. It's a long way to go. I thought I'll ask you a couple of personal questions as well, because we are here in Bihar where caste, is such a big factor in everyone's day-to-day lives. But you followed your heart and you married for love. You didn't care about religion, you didn't care about caste. How did you have the courage to do that? That's a personal question, but I would love to give an answer. See, it's about understanding, and it's about partnership, and it's for the whole life. So you need a perfect partner who should be behind with you, and you should be behind her when she'll face some problem, to give support to each other. But I really want it to happen with if both side families should agree about it. I didn't want, we never wanted anyone to be unhappy with this. When my father, my parents, they asked about it, I said it. Yeah, I've been dating this girl and I would love to marry her, but she's Christian. My dad was like, it's okay, no problem. So nothing. ऐसा लोग जो लालू जी के परसेप्शन को या हम लोगों के परसेप्शन को या बिहार के परसेप्शन को ऐसा कहा जाता था, वो ऐसा कभी रहा नहीं. My dad had always given freedom to my sisters और हमेशा उनको आगे हमेशा करते थे. तो ऐसी कभी कोई बात नहीं है. अब जब हुआ, अब सब लोगों का अरेंज मैरिज हुआ, तो ऐसा कोई मतलब फोर्सफुली नहीं हुआ. Never happened, and they are happy. I am happy now. So, and my parents are happy. Well, you followed your heart. So is that Tejashwi Yadav in politics too? You follow your heart, dil se? No, definitely. Well, it's going to be interesting to see how this innings plays out for you, Tejashwi Yadav. Thank you very much for speaking to NDTV today and clearly endorsing Nitish Kumar to be the next Prime Minister. He's thrown the challenge to Mr. Modi. See, I am not endorsing. His work is saying, na? His work is saying. His Yeah. experience is saying. All right. Thank you so much, Tejashwi Yadav. Thank you.